This is a mock interview conducted by Forum IS Academy at New Delhi. The interview panel includes eminent academicians, retired bureaucrats, and other luminaries. The objective of the program is to acquaint the candidate with the format and expectations of the interview conducted by Uttar Pradesh Public Service Commission. Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. May I come in, ma'am? Please come. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, Namita. Please come. Please sit down. Thank you, ma'am. When is your interview? It's on 14th March. And this is for UP-PCS. G. So why are you doing UP-PCS? You are employed as a ad hoc professor, assistant professor in Delhi University. Ma'am, I've been working over there. So it was a temporary position, so I had to resign. So after resigning from the position, I started preparing for civil services, ma'am. Have you stayed in UP? Ma'am, I am born and brought up in UP In only. Ghaziabad, no? G. That's not UP typical. Ma'am, पूरा schooling मेरा मुरादाबाद से हुआ है. Achha. जी. Recently, as far as a sport is concerned, there has been some development in the last 2 days regarding women. Can you recall what that is? Ma'am, Women Premium League Very good. was launched very recently, on the lines of IPL. Do you follow cricket? No, ma'am. Okay, neither do I. That's okay. I'll give you a situation. You are a district magistrate in a district where there is a lot of crime against women. And you have just come. So what will you do? Say you are DM, Ghaziabad is bad enough. You can be DM Kanpur. That's also very bad. Or Lucknow. So what will you do? How will you go about it and what are steps you'll take? Ma'am, I will first try to understand what are the problems the women are facing over there, what kind of harassment they are facing. I will take help of my colleagues who are there. Okay, first you apprise yourself of the situation. Yeah. Then I what will will you do? understand. What Then action I will you will. Then I will, with the help of police, I will try to take the actions. What actions? Ma'am, it depends on the type of crimes which are going on. You visualize and tell the scenario. What will you do? Okay. So, ma'am, if it is Crime a case, is what? Crime is eve teasing, harassing, rape. Yeah. These are the crimes that if take it place. is, ma'am, if it is a case of eve teasing, then I will definitely take the help of police. और कुछ इस तरह से मैम किया जा सकता है कि कुछ civilians की तरह से dress up होकर के police. Decoys. You'll do decoys. Or anything else? And apart from that, ma'am, एक ऐप की कुछ हेल्प ली जा सकती है या इंटरनेट या सोशल मीडिया की हेल्प ली जा सकती है. एक तो डेटा गैदर करने के लिए अबाउट सच टाइप ऑफ केसेस की किस तरह के प्लेसेस पर हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो एक हेल्प ली जा सकती है मैम. और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए या फिर इस तरह से अवेयरनेस इन द सेंस कि लोग अगर ऐसा हो रहा है तो लोग डरे नहीं, मतलब जो फीमेल हैं वो डरे नहीं, आके कंप्लेन करें. और सेकेंडली अगर कुछ पनिशमेंट्स हैं तो पनिशमेंट्स को भी ओपनली थोड़ा सा बताया जाए ताकि जो क्रिमिनल्स हैं, जो गूंस हैं, उनको भी थोड़ा सा डर रहे कि हाँ मतलब इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं. Do you know UP का sex ratio क्या है? Yes, ma'am. It is 912. And what is the national? National 940. 940. In this context of women, technology has played a negative role. Ma'am, technology के pros and cons दोनों ही हैं. No, I'm asking in which area has technology played a negative role? Negative role, ma'am, इस केस में रहा है कि सोशल मीडिया से बहुत easily आप ट्रेस कर लेते हो. जैसे लोग अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं. I will ask my question again. Yeah. Now, after the next question, name 3 women-friendly legislations. 3 laws जो पास किए गए हैं जो आपके हिसाब से आपके क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. In order of importance. Ma'am, Domestic Violence Act and Crime Against Women at the Workplace Prevention. That's not crime against sexual harassment, it's called. Sexual Harassment at the Workplace Prevention and Prohibition Act. And ma'am, I can recall these 2.
You heard of PCPNDT Act? Yes, ma'am. What is it? That is for ma'am neonatal Prenatal diagnosis, diagnosis of sex So now of isn't the that an child. area where technology plays a negative role? Yes. They put that machine into a jeep and go to rural areas. Western UP में तो बहुत हो रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. This is one. So you were given a travel grant by ICMR BMGF, huh? What is this travel grant for? Ma'am, ICMR travel grant is been provided for young researchers to attend a conference, not to attend, basically just to where they go and present their work. So where did you go? Ma'am, I went to Bangkok. And what did you present? Ma'am, I presented my research work on was? genital chlamydiasis, ma'am. It's a STD pathogen which causes sexually transmitted diseases in women and men both. Which is the most common RTI? RTI. Reproductive tract infection. Oh, reproductive tract For women, infection you in specifically women. that Yeah, part, ma'am, HIV and it's not very No, which is the most prevalent in India. most prevalent. Yes. Ma'am, chlamydia trachomatis is pretty much Correct. prevalent. All right. So do you think that ICMR is a regulator, right? Yeah. Do you think ICMR should also be doing research? It's a conflict of interest because regulator and a player in the field? Ma'am, there's no denying in that ICMR institutions, they are actively participating in research in various thrust areas. So, ma'am, it depends. मतलब अगर ICMR एक check balance बना सकता है तो ये काफ़ी अच्छा है कि अगर research में भी ICMR आगे आता है because it's a apex body. No, should there not be a regulator separate and a research body separate? उसका time उसमें जाता है, उसका time and there's a conflict of interest. मैम अगर separate हो सकता है तो if ICMR is laying down the protocols for clinical trials. Yes, ma'am. And ICMR itself is doing clinical trials. So there's a conflict of interest there. Ma'am, a separate body should will definitely help, but अगर एक पर्टिकुलर बॉडी के पास दोनों फंक्शंस हैं तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ऑनेस्टली अपना काम करते हैं. Conflict of interest. Tomorrow the DGCA starts flying planes. Same thing. Yeah. Okay. So BMGF also participated, huh? Bill, Melinda Gates Bill and Foundation. yeah, Miss Ma'am. Bill So it Gates was a different, ma'am. It was a different presentation. Acha, you have written here that travel grant from another one. Doesn't matter. So BMGF, what was it? What was that presentation? Ma'am, basically Bill and Melinda Gates Foundation, it sponsored the conference in which I have participated, and again I have presented my work, oral presentation. Which one? Same one? Ma'am, the work was different. मैम जो मेरा PhD वर्क था वो बेसिकली स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस के ऊपर था जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होते हैं. तो वहाँ पर मैंने अपना जो वर्क प्रेजेंट किया था, जहाँ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वाला जो था, उसमें मैंने ये वर्क प्रेजेंट किया था कि यूरिन सैंपल में हम नॉन इन्वेजिव वे में उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं क्लैमिडिया को डायग्नोस करने के लिए. बिल गेट्स वाज इन इंडिया रिसेंट. आपका इंटरव्यू का मिक्स्ड होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स. जी. बिल गेट्स रिसेंटली इंडिया में थे. जी. तो इन्होंने क्या कहा है बेसिकली? He has given a talk, the Ramnath Goenka talk. So what has he said? 2-3 खास चीज़ें बताइए आपके क्षेत्र से संबंधित, हेल्थ के क्षेत्र से संबंधित. मैम मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट मैंने थोड़ा ही पढ़ा था. तो उसमें ये उन्होंने बोला था कि इंडिया में मतलब हेल्थ रिसर्च के लिए इन जनरल जो रिसर्च के लिए काफ़ी पोटेंशियल है और उसको टेक्नोलॉजी को हब फॉर इनोवेशन. But apart from that, areas कौन से बोले? Ma'am, areas. Sorry, I'm not aware. All right. Vaccine. Vaccine. Then test. He said you can replicate very fast. You read it. His speech is useful. Okay. Biomedical science में क्या cover होता है? आप क्या पढ़ाती हैं? मैम बायोमेडिकल साइंस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे. मैंने जो पढ़ाए थे वो सेल बायोलॉजी का कुछ पार्ट था, कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी थी और ह्यूमन पैथोलॉजी था एक पेपर, और एक था. Do you know what is plasma fractionation? Plasma fractionation. It's isolating plasma from blood. No. Is breaking up plasma. No, ma'am. You don't know. Achha, tell me. I will say that there is a lot of wastage of blood. How is blood wasted in our country?
मैम वेस्टेड इन द सेंस कि एक तो जो उसको कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो अगर प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है, उसको स्टोरेज का प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है, और से ब्लड कलेक्शन हुआ और वो कोएगुलेट हो गया तो वो वेस्ट हो जाएगा, या फिर उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज अच्छा नहीं है तो वो उसके अलावा मैम वेस्टेज, द बिगेस्ट वेस्टेज इज जब आप ब्लड का कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, होल ब्लड यूज कर रहे हैं. हाँ. For example, in dengue, you use the platelets. You just have to do blood component separation, but you give whole blood. Or the next stage is plasma fractionation. जो fibrin, है तो fibrin glue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. For surgeries, you can just use it to stick. Proteins, those extractions we are not doing. So that is wastage of blood, right? Okay, all right. My last question to you. Why do you think that there is so much of IUCD rejection amongst women? Intrauterine contraceptive devices. Ma'am, rejection. I mean, or shall I say, why is it is if a device is meant to be for 3 years, it's taken out in 9 months. Just using plug figures. Ma'am, one is that maybe the female is not feeling comfortable with that. Another one is the urinary tract infections which are prone in the Screening for that is not done. Yes, ma'am. Secondly, pregnancy is also not screened. Yes, ma'am. And it is something related with partner's wish as well, ma'am. खसरा खतौनी आप जानती हैं? Ma'am, खसरा हाँ मतलब खसरा खतौनी शजरा पढ़ लीजिए. बहुत ज़्यादा नहीं. हाँ. Doesn't matter. Okay, thanks. Thank you. So नमिता, सर. तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में पढ़ाया है? सर आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज. NDC? जी. कितना समय तक पढ़ाया? सर 3 years 4 months. उसके बाद सर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर. You resigned or the nature of वैकेंसी चेंज्ड? क्या हुआ? सर दोनों ही रीजंस थे. पहला रीज़न वो था कि जो पैनल के क्राइटेरियाज थे वो चेंज हो गए थे. सो आई वॉज देयर ऑन अ वेरी टेम्परेरी पोजिशन. टिल किस समय थे वहाँ पे? मैम सर आई वॉज देयर टिल अक्टूबर 2020. अक्टूबर 20. कौन था प्रिंसिपल? सर प्रोफेसर रवि टुटेजा. ओके. और MSc कहाँ से किया? सर बनस्थली विद्यापीठ. PhD? बिट्स पिलानी. PhD का टॉपिक क्या था? सर it was broadly genital chlamydiasis. Exact topic was studies on immunomolecular pathways triggered by chlamydia trachomatis infection. इतना पढ़ लिख कर ये डिप्टी कलेक्टर और बेसिक शिक्षा अधिकारी और असिस्टेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेट क्या करने जा रहे हो? Sir, initially it wasn't the plan. Initially I was not very much aware about the civil services. So जब मैंने स्कूलिंग किया था तो उस टाइम पे 2 ही चीज़ों का ट्रेंड होता था, या तो लोग मैथ्स लेते थे या फिर बायोलॉजी लेते थे, बिकॉज ईदर दे वांटेड टू बी एन इंजीनियर और डॉक्टर. सो आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, सो आई ऑप्टेड फॉर दैट. सर somehow I couldn't qualify the MBBS exam. I qualified the BDS one, but I was not willing. अभी क्या है मतलब आप your PhD have been awarded, right? Yes sir. तो फिर टीचिंग क्यों नहीं, इधर ये सब क्यों जा रहे हो? सर टीचिंग के दौरान मेरा मन बना कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है. टीचिंग से मोह भंग हो गया? कह सकते हैं सर. कह सकते हैं. क्यों? Sir, it was a temporary position, sir. I was unable to harness my potential. Well, suppose you get into any college of UP through UPPCS or something as a assistant professor. You will love to choose that, or you will love to be a deputy collector? Sir, I would love to be a deputy collector. Okay, so that orientation is there, है ना? Now, I just have 2-3 questions, not much. जो विमेन क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट्स ए कास्ट क्वेश्चन और क्लास क्वेश्चन और जेंडर क्वेश्चन? सर विमेन के केस में तो आई थिंक सबसे पहले इट इज जेंडर. इट इज जेंडर, श्योर. सर जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो जेंडर से रिलेटेड ही ज़्यादातर अराइज होती हैं, राइट फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ टिल एन अडल्ट. मतलब सबसे ज़्यादा जो इश्यूज जनरेट होते हैं, जो मुझे एज अ फीमेल खुद फील होता है, वो काफ़ी जेंडर से रिलेटेड होते हैं, जैसे सिक्योरिटी का, सेफ्टी का इशू,
या फिर बहुत सारे फैमिलीज में सन मेटा प्रेफरेंस का इशू है, उनको जो फीमेल चाइल्ड है उनको उतनी फैसिलिटीज हाउ नहीं मच मिल पा ऑफ रही। इट इज ए कास्ट एंड क्लास क्वेश्चन और रिलीजियस क्वेश्चन? ठीक है, तुमने कहा जेंडर ही होता है बाय एंड लार्ज। अब मैं दूसरे सवाल पे हूँ कि इसमें क्लास, कास्ट और रिलीजन का कितना स्पेस है इस जेंडर इशू पे? उनका भी एस्पेक्ट है, बिकॉज क्लास बेसिस पे भी डिफरेंसेस फिर जनरेट होते हैं कि सो कॉल्ड अपर क्लास से हो या फिर मिडिल क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, तो उससे जो उनका एक पोजीशन है वो चेंज होता है। पोजीशन के साथ उनको अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। से अगर कोई एक लेडी बहुत प्रिविलेज क्लास में जन्म लेती है तो उसके पास जो फैसिलिटीज हैं वो डेफिनेटली जो एक सो कॉल्ड लोअर क्लास के पास हैं वो नहीं होती। तो सर ये भी मैटर करता है। तुम्हारे ख्याल से विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है? सर विमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है, प्रयास बहुत लेवल पे करे जा रहे हैं, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो जेंडर सेंसिटाइजेशन है सर, कि हमें बचपन से ही बच्चों में भी ये शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए स्कूल लेवल से ही, कि जेंडर को वो एक इस तरह से एक बायसनेस की तरह से ना लें। जो एक रिस्पेक्ट एक मेल डिजर्व करता है उतनी ही फीमेल डिजर्व करती है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा सर है वो है आप एजुकेशन। अगर हम बहुत बेटर तरीके से तुमने बायसनेस की बात की, मैं एक सवाल का आंसर जानना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि जितना जेंडर स्पेसिफिक जो रूल्स हैं वो अदर वे राउंड बायस्ड हैं? पूछ रहा हूँ सर बायस्ड विमेन के लिए, मतलब विमेन के फेवर में है। विमेन के फेवर में है और बिल्कुल आप मतलब एक फॉल्स केस भी है तो सामने वाले को आप बिल्कुल प्रिज्यूम कर लेते हैं कि मामला गड़बड़ है। सर ऐसे इंस्टांसेस आते हैं, ऐसा नहीं होता हमेशा कि सिर्फ फीमेल ही विक्टिम होती है, बहुत बार मेल भी विक्टिम होते हैं, बट जो ज़्यादातर इंस्टांसेस हैं उसमें यही पाया गया है कि फीमेल ज़्यादा सफ़र करती हैं। और जो इस तरह का हमारा सेटअप रहा है सोसाइटी का, एक पेट्रियार्कल सेटअप रहा है, तो उस केस में विमेन को थोड़ा ज़्यादा सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट्स ने जितनी भी आई हैं, उन्होंने ये प्रयास किया है कि उनको हर तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश की जाए। अगर एक फीमेल जो है उसने फॉल्स कंप्लेंट भी कर दिया तो एक मेल को 20 साल लग जाएंगे शायद उससे बाहर निकलने में। सर है ऐसा, मतलब ये आपकी जो ये मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ऐसा हो सकता है, मतलब फॉल्स केसेस की भी इंस्टांसेस हैं, बट इतने भी कॉमन नहीं है। चलिए ठीक। What do you understand by the term defeminization of feminism? Defeminization. Sir, sorry, I'm not very much. Basically, it relates to how women are basically forced to compete with male counterpart by shedding of their feminist traits. जैसे आता है पावर ड्रेसिंग का नाम सुना है? पावर ड्रेसिंग में जनरली जो कॉर्पोरेट ऑफिस में औरतें काम करती हैं वो छोटे बाल कटा के रखती हैं जी। फिर मेल जैसे शर्ट पहनना और वैसा फनल शेप के स्कर्ट पहना, दीज आर द पावर ड्रेसिंग। तो बेसिकली defeminization of feminism is basically when you try to match feminism with like a women with a men. Okay. ठीक है, तो that is anyways. So you have a biology background. Yes. Can you tell me why white flowers bloom at night? Sir, I'm not very much aware about botany. ठीक है, अच्छा. Can you tell me difference between bioremediation and phytoremediation? Have you heard of this term? Yes, sir. Bioremediation? Yes, sir. Yes, sir. Sir, bioremediation is when we utilize microbes, basically, such as bacteria or fungus for the remediation, say for cleaning of or for the decomposition, basically I should say, for the decomposition of material, and phytoremediation when we dedicatedly use plants for the remediation. So what's the limitation? कोई limitation है इसकी? Sir, किस तरीके के वेस्ट को आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं या किस तरीके के पॉल्यूटेंट को कांट बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ बायोरेमिडिएशन एंड फाइटोरेमिडिएशन? सर एक तो प्लास्टिक को नहीं ट्रीट किया जा सकता है बायोरेमिडिएशन के थ्रू, ठीक है।
एंड सेकेंडली सर, जब बैक्टीरियाज थ्राइव करते हैं ऑन पर्टिकुलर सॉलिड वेस्ट, तो कुछ गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो हैं वो, दीज आर द नेगेटिव एस्पेक्ट। मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसी लिमिटेशन है कि कोई इस पर्टिकुलर काइंड का वेस्ट होता है जिसको आप बायो रेमिडिएशन और फाइटो रेमिडिएशन से ट्रीट नहीं कर सकते? सर अभी तो मैं प्लास्टिक ही सोच पा रही हूँ। ठीक है, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स, ठीक है। बायो कॉन्सेंट्रेशन और बायो मैग्निफिकेशन में क्या फ़र्क होता है? सर बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो कॉन्सेंट्रेशन, सर कैन आई टेक सम टाइम? यू कैन ट्राई। Sir, it is related basically from the food chain, where if a particular toxic material, when it goes from the primary consumer till secondary and tertiary consumer, it keep on magnifying in the particular uh, organism's body, sir, and that is biomagnification. And concentration is when the particular organism is unable to excrete out that particular the particular substance, so it keep on accumulating in the body of the organism, say in the body of fish, in the what we have seen in the case To of some extent it is right. ठीक है, just tell me a few issues which pertains to GM crops. सर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ जो इश्यूज हैं वो एक तो ये है कि जो ऑलरेडी वाइल्ड में अवेलेबल क्रॉप्स होती हैं, अगर वो उनके साथ हाइब्रिड जो जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स हैं उनका अगर से ब्रीडिंग होती है, तो या मतलब हाँ ब्रीडिंग अगर होती है तो वो एक नए तरह का हाइब्रिड बनने के चांसेस हैं। तो उससे जो हमारे वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको एक उनके एग्जिस्टेंस पे एक ये है कि मतलब वो एग्जिस्टेंस मतलब उनका कितना रहेगा, पता नहीं वो एग्जिस्ट कर पाएंगे जीएम क्रॉप के प्रेजेंस में या नहीं। ठीक है। और एंड अनदर वन सर की बॉडी में अगर हम जीएम क्रॉप्स ले रहे हैं तो जो एक ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, और पर्टिकुलर जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो भी सब्सटेंस बॉडी में जा रहा है, से द प्लांट, उससे बॉडी में इफेक्ट कितने टाइम बाद पता चलेंगे उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, तो इसीलिए अप्रीहेंशंस रहते हैं जीएम क्रॉप्स को लेकर के सर। ठीक है, तो चल इतना काफ़ी है। वन मोर थिंग, कैन यू टेल मी what are magisterial powers? Magisterial powers, sir, in the case of collector or deputy collector, sir, basically these are the powers which the official gets from the Code of Criminal Procedures, CRPC. So law and order की सर एग्जांपल बता दो। सर लॉ एंड ऑर्डर की पावर होती है जैसे कि कर्फ्यू 144 CRPC 144 के थ्रू। उसके अलावा सर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की पावर्स होती हैं, गैंगस्टर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की पावर्स होती हैं डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू, जैसे सर 129, 130, 131, 132। ठीक है, ओके, फेयर इनफ, थैंक यू। Yeah, Namita. Okay, you have a biology background, right? So, can you tell me why viruses like COVID-19 virus, why do viruses mutate? Sir, viruses, they have this tendency of mutating because viruses, whenever they are out, they act as a dead particle. तो उनको अपने आप को एक तो सर ये it's automatic, it's there, it's inherently there in the nature कि वो mutate होंगे ही होंगे to survive, proliferate maybe, क्योंकि उनको अपने आप को इतना पोटेंशियल बना के रखना है कि उनको जब भी कोई होस्ट मिले तो वो उसमें जा कर के अपने आप को थ्राइव कर सके, जिससे इन्फेक्शंस कॉज होते हैं। तो जेनेटिकली वो म्यूटेट करते रहते हैं। Okay, do you think that our IPR regime, this what do you say, the defective IPR regime is becoming a bottleneck for India's several competitiveness and innovation? Yes, sir, till some extent we can say, because IPR, intellectual property rights, basically most of the times it takes quite a long time in clearances. Yes. So
बाय द टाइम तो ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर जो even filing innovation, is even yeah, filing by IPR, it's a very it's a cumbersome process, sir. Yes, It takes a lot of time. और इतनी देर में तो मतलब जितना टाइम लगेगा पता चलता है कि आपने जो कुछ भी इनोवेटिव वर्क किया है वो तब तक इनोवेटिव रहा ही नहीं जब तक. Okay, so are you aware about this term glass cliff effect? Yes. Earlier it was glass ceiling, now it's glass cliff. So what is Yes. glass cliff? Sir, it is related, this term is related with women, स्पेशली जो बहुत हाई पोजीशंस पे पहुंचती हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद अगर वो किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जो बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग पोजीशन है, तो अगर कुछ भी गलती होती है तो गलती होती है उनको उसी जगह पे डाला जाता है ताकि मतलब कि वो वहाँ पे फेलियर के चांसेस रहें, और इन केस अगर बाय एनी चांस कुछ भी गलती होती है तो वो पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो उनके ऊपर इजीली पास ऑन किया जा सकता है. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्लास सीलिंग, सर. ओके, सो यू हैव हॉबीज, you watch web series, so which was the latest one you have watched? Sir, I watched Stranger Things. Okay. Farzi You watched? Okay, so which character did you think that was like did the best? So there's a policeman in that which was played by Vijay Sethupathi. Do you think that whatever he does for the good, for the betterment of all, do you think that his actions are ethical? Sir, how he blackmails a minister and all, but for good. So do you think that's ethical? Again, if we go into debate, it's like the means and the goals. So should we put more emphasis on the means or the goals? Sir, both are important actually, but depends. अगर बहुत ही heinous crime है तो I think goal What पे. about Vijay Sethupath's? Was he ethical in that series? Sir, not completely, but he's trying to. Okay, what is OTT? It's a full form of OTT is over the top platforms. So basically, the Netflix, Amazon Prime. Do you think that OTT they should be regulated? Censorship should be put. Yes, sir. Basically, they are not regulated as such. They are under self-regulation. कि उनको अपना content खुद ही regularize करना है और grievance redressal system को improve, मतलब को बनाए रखना है. But yes, sir, it would be better if they are regulated. It would be better. Yeah. Won't it curb the freedom of expression? Sir, freedom of expression से that is important, but फिर बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. से किस टाइप का कंटेंट सोसाइटी में जा रहा है और किस टाइप का कंटेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंटेंट अगर आप ओपन रखोगे तो बहुत बार ऐसा होता है घर पे उसे बच्चे भी देखते हैं, तो वो एक चेक रखना ज़रूरी है सर कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग. ओके, आर यू अवेयर अबाउट दिस Swanidhi scheme? PM Swanidhi scheme. Yes, sir. This scheme is dedicated for street vendors. Yes, very good. What is inverted duty structure? Inverted duty structure, sir. Sir, it is related with GST and GST. Are you sure or are you making guesses? Inverted duty तो sir I think GST से related है. Okay, आप पढ़ लीजिएगा एक बार. Feminization of agriculture, no? Recently, it's in like economic survey and all is that put. What is it? Feminization of agriculture? Sir, feminization of agriculture, it's कि ज़्यादा जो women हैं रूरल सेटअप में वो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, बिकॉज जो उनके मेल काउंटर पार्ट हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं डिफरेंट सिटीज़ में टू गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो इस वजह से जो फेमिनाइजेशन है एग्रीकल्चर में वो ज़्यादा देखा जा रहा है, बिकॉज मेल तो नहीं है वहाँ काम करने के लिए, तो फीमेल्स काम कर रही हैं. प्लस इस पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो सर विमेन काम करना विलिंगली भी करना चाहती हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हेल्प से या फिर गवर्नमेंट के और जो एग्रीकल्चर ओनली. Yes. Feminization. Okay, so lithium. Recently, we have seen that lithium was discovered in India. Yes, sir. Where? Sir, in Jammu and Kashmir. So why is lithium so important? Sir, lithium is important because lithium-ion batteries are used in the electric vehicles or in I think in solar panels as well. Okay. One last question. You said that you have been mentoring students, right? So what are the three main qualities of a mentor or being a very good mentor? What are the three basic qualities? Sir, the most important one, then he or she should be a good listener. Good listener.
Good listener. Yeah. Mentor or the student? मेंटर, कि वो अगर स्टूडेंट उनकी कोई प्रॉब्लम को बता रहे हैं तो मैं पहले उससे अच्छे से सुनूं, Okay. उसको Second? समझूं और फिर उसको अपने से रिलेट करके उसको समझने का ट्राई करूं कि एग्जैक्टली उन्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं उनकी जगह होती या मैं उनकी एज पे थी तो Second मुझे thing? क्या इश्यूज थे। सेकेंड सर यही कि मैं उसे अपने आप से रिलेट करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझूं, और थर्ड ये कि जितना बेस्ट हो सके मैं उन्हें गाइडेंस देने का ट्राई करूं, जो मैं करती आई हूँ। नहीं, these are like this is your job, this you have to do. But what are the सर जॉब qualities छोड़ने one के should have? बाद भी आई कीप ऑन नहीं, डूइंग this दिस। is your job, like being a mentor, this is your job. Yeah. कि relate करना, उनको समझाना, उनको guide करना. But what are the qualities, inherent qualities जो आप में होनी चाहिए? जो Like you said, you should be a good listener. Yeah. And that was the first thing. What is the next best thing? Means Should have empathy as well. okay, empathy. And third, And third one, some kind of leadership is required. Leadership in this. also. Yeah. okay. One last question. What is a deep fake, Sir, and why is it a problem? yes, sir. Sir, in the case of cyber securities or cyber crimes, deepfakes is one very ongoing and upcoming problem in the field. Basically, इसमें मतलब इसमें इस तरह का फेक डेटा या फेक पिक्चर्स जनरेट किए जाते हैं या वॉइसेस को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि ये जज करना ही ऑलमोस्ट डिफिकल्ट, नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है कि ये फेक है या रियल है। Okay, so why is it problem? जी Why is it a problem? Means why is it a सर bigger problem? प्रॉब्लम ये है कि इसे मिसयूज बहुत ज़्यादा किया जा सकता है कि मान Yes. लीजिए मॉफ्ड इमेजेस हैं या फिर मॉफ्ड वो है आपका speeches. स्पीचेस हैं, That can वॉइसेस हैं। incite violence and all. यस सर, Okay, Namita, thank you. थैंक यू।